Namaskar all the students, myself Umesh Kumar Shekhawat. Today I am going to teach the new topic in the solid state, that is defects or imperfection. In the last video we will discuss the classification of solids and the unit cells and the numerical related to the unit cell, that is density, calculated density, number of atoms and the molecular formula. Now the next topic is defects or imperfection. What is the defect? Defect is the any change in a perfect arrangement. Just like कि आप हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, तो हमारे पास एक परफेक्ट बॉडी क्या होती है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं और एकदम हम मतलब कोई भी हमारे फिजिकली हम हैंडीकैप नहीं है, ठीक है, सब चीजें हमारी बॉडी एकदम सही है, किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या है, परफेक्टली अरेंजमेंट है. अगर किसी के अगर एक फिंगर भी कट गई तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ डेविएशन, इट्स मतलब इम्परफेक्शन आ गया बॉडी में, दैट इज द डिफेक्ट. नाउ द व्हाट इज द डिफेक्ट इन सॉलिड. सॉलिड में डिफेक्ट कैसे, दैट इज वी नो दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द constituent particle. It's a regular arrangement of the constituent particle, and the any deviation, any type of change, any deviation from perfectly ordered arrangement of constituent particle in a crystal is called as a defect or imperfection. किसी भी तरह का कोई भी change अगर crystalline solids में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, that is defect or imperfection so in a solid. Now defects are divided into two parts, that is point defect and the line defect. What is the point or line defect? The point defect is deviation from the ideal arrangement of the constituent particle around a point. एक point lattice point के अगर चारों तरफ में कोई किसी भी तरह का आइडियल अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाता है तो उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट क्या होगा, that is deviation from the ideal arrangement in an entire row. एक रो में कितने उस रो में पॉइंट्स आ रहे हैं, that's not matter, but एक पूरी entire रो में अगर कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस आता है तो हम उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट इज in not in your syllabus. Now only discuss the point defect. Now the point defect again divided into three parts, that is stoichiometric defect, non-stoichiometric and impurity. The stoichiometric and non-stoichiometric and impurity. Impurity is a simple thing. जैसे NaCl है, NaCl is present. NaCl is a pure form of the solid. और अगर हमने उसमें कोई impurity मिला दी, जैसे हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया या अदर कोई केमिकल उसमें ऐड किया, तो जो NaCl था, जो परफेक्ट अरेंजमेंट था, वो क्या अब क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी उसमें ऐड करती है तो किस तरह का डिफेक्ट आएगा, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. एंड स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इसमें जो सॉलिड्स होंगे उनका स्टोइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होगी, बट इन द दिस टाइप ऑफ सॉलिड इनके अंदर उनकी स्टोइकियोमेट्रिक क्या हो जाएगी, डिफेक्ट. व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? The stoichiometric defect in which the cations and anions ratio will be same as a chemical formula, but in the non-stoichiometric defect the cation and anion ratio will be changed. यहाँ रेशियो सेम रहेगा, यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, cations and anion का डिफरेंट हो जाएगा उनके केमिकल फॉर्मूले से. That is the stoichio or non-stoichio. A stoichiometric defect again divided into two parts, that is non-ionic and ionic. The non-ionic it means that the non-ionic solids में जो present होगा defect, that is non-ionic solid stoichiometric defect, and ionic में जो present होगा that is ionic stoichiometric solid defect. Now non-ionic again divided into two parts, that is vacancy defect and the interstitial. And the in ionic solid again the Schottky and Frenkel. Schottky and Frenkel was a scientist and the given by the Schottky and Frenkel. The vacancy is resemble with the Schottky and the interstitial defect resemble with the Frenkel. But this type of defects are present in a non-ionic solids. But these two Schottky and Frenkel defects are present in a ionic solid. Now the next is non-stoichiometric. Non-stoichiometric again divided into two parts, that is metal excess or metal deficiency. मेटल की एक्सेस की वजह से और मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से. So metal excess again by the two reason. First is by the anion vacancy. If the anion
your metal excess, metal ions are will increases. Now the second is cation in interstitial site. If the cation increases, then again metal excess. Now the second is metal deficiency due to the cation vacancy. If the cation vacancy developed, then the metal deficiency increases. Now the next topic, the stoichiometric, we will discuss. Now we will discuss the stoichiometric defect. The stoichiometric defect divided into two parts, that is ionic non-ionic solid defect and the ionic solid defect. That now the non-ionic solid defect, the non-ionic solid in which the two defects are arises, that is vacancy and the interstitial. That is the part of the non-ionic solid. Okay, and in the ionic solids, that is Schottky and the Frankel. Now what is the difference between the vacancy and the interstitial? That is vacancy defect in which the some constituent particles, I can say atoms, are missing from the lattice points at which they are present, due to which the vacancy is developed in the non-ionic solid. And then the density, what effect on the density? Due to the missing the lattice point, the atoms from the lattice points, the density should be decreases. But in the interstitial defect, the all lattice points at which the atoms are present, but the more atoms are come from the outside and occupy the interstitial space in between the atoms. जो भी present होगा interstitial sites, जो space present होगा उसको occupy करेंगे from the come from the outside atoms. Due to this type of defects, the density is increases. Now in the second is ionic solid. Ionic solids again two types, that is Schottky and Frankel. Now the Schottky resemble with the vacancy and the Frankel resemble with the interstitial. इसलिए मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है. Okay, Schottky just like vacancy again in the, but it is the present in the ionic solid. Frankel also present in the ionic solid. Okay, now in the Schottky is the scientist, that is उनके नाम पे इसको डिफेक्ट को इसको नाम दिया है, that is the cations and anions. In the Schottky defects, the cations and the same number of cations and anions are missing from the lattice points, due to which the density is decreases, but the neutrality should be maintained. Neutrality इनकी बनी रहेगी, one cation जाएगा तो one anion जाएगा, but इनकी density क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. Okay, but in the Frankel में जस्ट हम इसको देखें अपोजिट में, इससे रिजेंबल करते हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ था? वैकेंसी मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द आउटर एटम्स, बट यहाँ पे क्या होगा? द लैटिस पॉइंट्स, द केटायंस और एनायन में भी अपनी लैटिस साइट को छोड़ के जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होंगे उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे. जैसे ये यहाँ से कैटायन था, उसने इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने लैटिस पॉइंट को क्या कर दिया? वेकेंट कर दिया. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज ए फ्रैंकल डिफेक्ट. इज आल्सो रिजेंबल विद द इंटरस्टिशियल, बट यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे. एंड न्यूट्रलिटी की अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं तो न्यूट्रलिटी इसकी क्या होगी? शुड बी सेम, आल्सो शुड बी सेम, क्योंकि कैटायन हो या एनायन हो, वो अपने ही एंटायर लैटिस में ही अपने लैटिस पॉइंट्स को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा, तो उसकी न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन द Schottky and Frankel इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ये किस तरह के आपके
नॉन आयनिक सॉलिड में देखा जाता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। और जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो ज्यादातर उन आपके सॉलिड्स में देखा जाएगा जिसमें क्या होंगे, उनकी साइज जो होगी ऑलमोस्ट सेम होगी। ओके, बट जब फ्रेंकल की बात करते हैं, ये फ्रेंकल जो होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट जो होगा वो मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, उन उस तरह के एटम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा। एंड जो साइज डिफरेंस होगा केटायंस और एनायंस का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम होगा केटायन एनायन का, बट इन द केस ऑफ फ्रेंकल द साइज डिफरेंस इज वेरी लार्ज, वहां साइज डिफरेंस होगा। द एग्जांपल्स ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट that is NaCl, KCl, CaCl, KBr, AgBr, and also here ZnS, AgCl2, AgI, AgBr. In the both condition, that Schottky and Frenkel is a common example in the of AgBr in which both defects are arises, that is Schottky and Frenkel. Now today's homework is, you write the homework. Question number 1. What type of defect can arise when a solid is heated, and which physical property is affected by it, and in what way? And the question number 2, the what type of stoichiometric defect is shown by A in ZnS and B in Ag. Thank you.